Let's take it. Okay, so welcome back with the new project, and it's none other than AI Assistant. And we'll not waste any time and move on to the project. Before that, I want to thank you for making 500 subscribers to my channel. And yes, let's go. So, AI Assistant basically needs API keys, but here comes a trick. Uh, I will not use any API key. Instead, I will use Olama. So, first of all, we'll go to Olama and we'll download it. And we can download Olama for Windows, for Mac OS, and Linux as well. So, Olama will be easily available to you as per your priorities. And yes, let's go. After installing Olama, we just have to create a folder called AI Assistant, right? And we'll code here and make sure that there's a virtual environment in your folder, and you can name according to your choice. So I'll code here and we'll start. So first of all, before we start coding, we need few libraries, right? So there are some libraries which need to be installed prior to the coding part. So let's go. So first will be our speech recognition. So it's pip install speech recognition. Yeah, and as you can see, मेरे में ये already install हो रखा है, so requirement already satisfied. And the next library we need to install is, you can also install Olama if but here comes a trick. This command will only, I think it will run for MacBook only. If you are not able to install Olama from the terminal, you can directly go to olama.com and download from there. And as you can also see, requirement already satisfied. So yeah, these were the two libraries majorly, and some other libraries we'll use, but वो पाइथन के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? So yes, it's a few lines of code, barely around 70 lines of code, and we'll start now. So first library is, we have to import speech recognition as SR. Okay, and we'll import OS, and we'll import web browser. We'll also import the major library Olama. So the use of Olama is running the AI assistant offline, right? It do not require any connection, or internet connection or what. So next library, import date time. Yeah, we are done with libraries. Now we have to create a chat string. So chat string. Yeah, that's it. अब हमें थोड़े से functions बनाने पड़ेंगे, like chat function to chat with the AI assistant, and command function to give the command, say function to let AI assistant say something, that what it has to say or not, right? So few functions are there. So first, our function will be def chat. So, and we'll give query here. Yeah. So we'll keep our chat string global. Uh,
Yeah, and we'll have a try block, and yeah, we'll try print f query, right? And we'll enter here query, and we'll close the string. Yes, we are done with it. Then chat string plus equals f user, and similarly we'll write here query, and I'll have slash n, and I'll write my name Priyansh. Yeah. So you can add your name, you can have your assistant name as your name, so it's your choice. So then we have to take the response of the Llama model, and I want to tell you that काफी सारे मॉडल्स होते हैं ओलामा के. So there are multiple models of Olama, but in this project we are using Olama Mistral. We can also use Llama 3.2, Llama 2. Something, but yeah, we are using Olama Mistral here. So response is equal to Olama dot chat, and the model I said we are using model equal to Mistral, right? And yeah, and messages equals, so first is our role, then okay, yeah, our role, then it will be, I guess, user, and then it will be content. And now content will be our query, uh, according to our query. Yeah. And what will be the reply? So reply will be response message, then content, and we'll strip it. So we'll use the function strip, right? And we'll print um, okay, we'll print Olama response is our reply. Yeah, I guess we are done. And now we need a function called say. So it's a simple function to basically let Olama model to speak, right?
So we'll have a function later, but we'll say reply. I have not made the function yet. I'll make it, I'll show you, but as of now, I'm writing that function here. I'm calling that function basically here. Okay, now chat string plus equals reply and plus slash n. Slash n is just for that space, and I'll return reply. Yeah, I guess we're done. And try and accept block it was. So accept exception as E. Okay. And now we have to print. अगर कोई भी एरर आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो प्रिंट कर देगा कि यस एक एरर अकर हो गया. सो सिंपली एरर इन llama API कॉल. ठीक है. और वो जो है वो आपका एक्सेप्शन हो जाएगा. एंड yeah, and I'm again calling that function say, which I have not made it yet, but I'll make it for sure. So sorry, and what do we say? Error occurred. Okay, so कोई भी अगर error occur होगा तो वो क्या बोलेगा? Sorry and error occurred. ठीक है? Next, we have to return the error. Okay. Yeah, I guess we are done with it. So chat function is complete. You can look it into it, and if any doubt, you can reach to me through my not Insta, Telegram handle. So the link is in the description. So okay, so I said that I'll make a function called say. So I'll make it def say, and this function contains only one line of code, and we have our text in it, right? And the code is os.system say, and what it will say, it will say the text. Yeah, perfect. Now I told you that multiple functions होंगे, chat function होगा, say function होगा, and one of the most important function is take command function, right? तो उसमें क्या होगा मैं आपको बता दूंगा. First, let me write take command. Okay, and no parameters here. So R equals sr dot recognition recognizer, and it will be a function. Okay, so with sr dot microphone as source. Okay, so I'll print listening. अब इसका सिंपल सा एक बात है कि जैसे ही आपका माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ही तो प्रिंट करेगा ये लिसनिंग. ठीक है कि ये अब सुन रहा है, आपकी बात लेने के लिए रेडी है.
टेक कमांड करने के लिए रेडी है। सो हम एक वेरिएबल लेंगे ऑडियो एंड आर डॉट लिसन। ठीक है, अब वो सुनेगा, ठीक है, और सोर्स को सुनेगा, ठीक है। एंड अगेन अ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक विल बी हेयर। ओके, सो ट्राई, अच्छा, प्रिंट करेगा रिकॉग्नाइजिंग। ओके, ठीक है, अगर आप कुछ बोलोगे, इफ यू से समथिंग, सो इट विल, if it will recognize, it is in the process of recognizing, it will print recognizing, right? If it is not, then it will print something else. I'll tell you later. But yeah, query equals r dot recognize Google recognize underscore Google audio. Um, is there something GNI audio, comma, language, and the language will be um, EN IN. Okay, so the language will be English and it will print user said। अब जो भी आपने बोला है, जो भी आपने बोला है उसको टेक कमांड किया है, वो डायरेक्टली जो भी कमांड आपने बोला है वो एज इट इज वो कमांड प्रिंट कर देगा। बेसिकली हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि जो प्रोसेस है, जो फ्लो है हमारा, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमें इसमें हम रिटर्न कर देंगे क्वेरी। ऑल राइट, सो and yes, except block is mandatory, so except exception as E, right? We have to print same thing, error, and comma E, and we'll return okay, we'll return some error occurred, and I'll say sorry from Priyansh. Okay, so then I'll have our if underscore underscore name underscore underscore equals 1 minute. Yeah, equals main, right? Then print. So we'll initiate it and we'll print welcome to Priyansh AI. Okay, so welcome to Priyansh AI. ओके, ए डॉट आई मैंने इसलिए लिखा है ताकि वो
ए अगर वो बोलते हैं ना तो एआई ना बोले, सीधा प्रॉपरली एआई मेंशन हो। ठीक है। उसके बाद इट विल से, अगेन हम से फंक्शन का यूज करेंगे, एंड सेम थिंग, वेलकम टू प्रियांश ए आई, right? And next line is while true query equal to take command function. Yeah, and also one thing is there, if you want to open some sites, like I'll say to my assistant that please open YouTube, please open Wikipedia, please open Google. So I'll uh, enter that for those sites equals, and like first is YouTube, right? So I'll take the URL of YouTube and paste it over here. So I'll take the URL of YouTube, I'll copy it, and I'll paste it over here. Right. Next is like Wikipedia. So I'll put a comma over here and I'll write Wikipedia. Okay. And then I'll just copy the Wikipedia thing and we'll be right back. So Wikipedia. I think it is Wikipedia only. Is it wikipedia.com? Yeah. I'll copy it and I'll paste it over here. And next I'll give a comma again, and this time it will be Google. Okay, so I'll paste the URL over here, Google. Right, we can also write google.com. I don't think it will be a major issue. So okay, we are done with it, and we'll write that for site in sites, we'll have a for loop, and we'll say if, I have two problems, expected balance 50. Okay, no problem. So if um yeah, open site in query dot lower, ठीक है, अगर साइट ओपन हुई query dot lower में, तो से क्या बोलेंगे, ओपनिंग, अगर हमने जैसे बोला कि ओपन गूगल, ओपन यूट्यूब, तो वो बोलेगा कि ओपनिंग, और देन वो साइट का नाम लेगा, ठीक है, एंड वो बोलेगा सर, ठीक है,
और ये बंद कर दूंगा. Yeah, we are done with it. And then we'll use our web browser for it. So we imported web browser, right? So web browser में web browser dot open type करेंगे and sites और site. Yeah, ठीक है, and we'll continue. Okay. So for loop के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एंड हम करेंगे इफ. अगर अभी तो हमने सिर्फ साइट की बात करी, अगर मान लो कि उसने बोला ओपन म्यूजिक, राइट? सो इफ ओपन म्यूजिक, अगर हमने बोला कि ओपन म्यूजिक, ठीक है, इन क्वेरी, किस में बोली? क्वेरी में बोली. क्वेरी में क्या बोला कि ओपन करो म्यूजिक, तो हम क्या करेंगे, एक म्यूजिक पाथ दे देंगे, ठीक है, एंड हम पूरा जो पाथ है वो अपना म्यूजिक उसका वो दे देंगे. तो जो मेरा पाथ है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, यूजर्स प्रियांश म्यूजिक. ओके, या. एंड व्हाट इज ओलामा? ओलामा जो है वो आपके लोकल सिस्टम पे रन करता है. दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग फॉर आर सेल्फ सफिशिएंसी, राइट? Nothing else. So os dot system open. अब क्या ओपन करेगा वो? म्यूजिक पाथ, राइट? ओके. सो ओपन म्यूजिक का हो गया, साइट का हो गया, कोई भी जैसे यूट्यूब, गूगल. एंड नाउ टाइम, हम क्वेरी भी तो रेज कर सकते हैं कि टाइम क्या हो रहा है. तो वो क्या करेगा, बेसिकली हमारे लोकल सिस्टम पे जाएगा और टाइम देखेगा और वो बता देगा कि व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, ठीक है. सो इफ हम बोलेंगे द टाइम, ओके, द टाइम इन क्वेरी, देन आर विल बी, हम डेट टाइम जो हमने इंपोर्ट करा था अ, उसमें से डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है. और उसके बाद हम एक फंक्शन होता है str f time and we'll have percentage h over here. या आर का हो गया. अब मिनट की बारी है कि अगर टाइम बता रहे तो आर में बताए, देन मिनट में बताए. और जो मिनट है वो हमारा डेट टाइम डॉट नाउ, ओके, डॉट नाउ डॉट टाइम एंड परसेंटेज में डालेंगे हम एम. ओके, तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि आर में एच, परसेंटेज एच डाला फॉर आर, परसेंटेज एम डाला फॉर मिनट, राइट? एंड नाउ अब जब आर और मिनट्स उसने रिट्रीव कर लिए अपने पास, तो वो क्या करेगा, वो हमें बताएगा. तो इट विल से, यू विल से फंक्शन एंड ही विल से दैट ओके सर, द टाइम इज, अब क्या, जो भी आर हो रहा होगा वो बोलेगा, ठीक है, एंड जो भी मिनट हो रहा होगा वो बोलेगा, ठीक है, और लास्ट में बोल देगा मिनट्स, इतने मिनट्स हुए तो बोल देगा, ठीक है, एंड वी आर डन विद इट. ओके, तो अगर हम बहुत ज़्यादा इफ लगा रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो यूज एलिफ. तो इट्स जस्ट नॉर्मल पाइथन कंसेप्ट. एंड नाउ
Um, we are done with the time, and if so, yeah, we'll use elif now. And if I say Priyansh quit, तो अगर मैं बोलूँ, मैं अपना ही नाम, मैंने इस जो एआई का नाम रखा है वो अपने ही नाम से रखा है, प्रियांश। सो अगर मैं बोलूँ प्रियांश क्विट, कहाँ बोलूँ? क्वेरी में बोलूँ। अगर मैं क्वेरी में बोलूँ कि प्रियांश क्विट, ठीक है, क्वेरी डॉट लोअर कर दो यहाँ पे। ओके, सो वो बोलेगा कि ठीक है, आपने बोला मुझे क्विट, तो मैं क्या बोलूँगा बेसिकली? गुड बाय सर। तो ही से गुड बाय सर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर क्विट हो रहा है सब कुछ, तो एक ब्रेक करके आता है, वो आपको पता होगा, बेसिक पाइथन कॉन्सेप्ट, कंटिन्यू ब्रेक। सो वो यूज होगा। नेक्स्ट, अब एक और चीज लिख लेते हैं, एलएफ। अगर वी हैव टू रीसेट ऑल द चैट, मतलब अभी तक जैसे मान लो आप चैट जीपीटी पे चैट करते हो, यू हैव टू रीसेट द चैट, ठीक है। तो इफ एलएफ मैंने किया रीसेट चैट, अगर मैं बोलूंगा कि रीसेट चैट, कहाँ बोलूंगा? क्वेरी में, इन क्वेरी डॉट लोअर, राइट। आई अज्यूम कि आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। तो चैट स्ट्रिंग जो हमारी है उसको एम्प्टी कर दूंगा, सिंपल एंड इजी। जो भी हमारी चैट स्ट्रिंग है, जो भी अभी हमारी बात हुई है, उसको मैं क्या कर दूंगा? एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारा एलिफ 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 हो गया। देन उसके बाद, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इनमें से मैंने कुछ भी नहीं बोला, राइट। अब या तो देख लो, अगर मैंने ओपन म्यूजिक नहीं बोला, साइट के लिए मैंने नहीं बोला, द टाइम, प्रियांश क्विट, रीसेट चैट, इनमें से कुछ भी नहीं बोला, तो एल्स आप अपना नॉर्मल काम करो। चैट फंक्शन जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, और उसमें क्या दिया था? क्वेरी। That's it, and we are done. It's barely 70 lines of code. मैंने गैप भी बहुत लिया है, so 72 हमारा आ रहा है, 70 lines of code, and we are done. And this was our whole project, and I'll show you how it works. And believe me, the results are really good. Okay, before that, we'll run it, and I'll show you a thing that if I'll run now, it will show an error. And the reason I'll tell you first. So, yeah. And as you can see, if I'm saying something, right? So it said, welcome to Priyansh AI. If I'm saying something, command not found, listening, recognizing, I said I'll tell. It said query, but API call nahi ho raha hai. The reason is I have not started the Olama right now. ओके, ओलामा अभी शुरू हुआ ही नहीं है, तो एपीआई कॉल कैसे होगा? ठीक है, तो ओलामा शुरू करने के लिए वी हैव टू गो आवर टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेरी डालनी है, ओलामा सर्व, ठीक है। जैसे ही मैं ये क्वेरी डालूंगा, सो आफ्टर रनिंग द ओलामा इन द टर्मिनल, now I'll show you the results, and believe me, the results will be massive. And now I want to tell you that after this, my after this line, जो भी मैं बात करूंगा, whatever I speak is with my AI assistant, nothing for the video. So I'll show how it works. So I'm running it now. Welcome to Priyansh AI. Hi, how are you?
Hello, I'm just a computer program, so I don't have feelings. How can I help you today? If you have any questions or need assistance with something, feel free to ask and I'll do my best to help. If there's anything specific you want to talk about or any topics you are interested in, let me know. I'm here to chat and answer your questions. Who is MS Dhoni? तो Countries. However, जो it भी could also refer to Microsoft Corporation, an American multinational. ओके सो जो भी हुआ मैंने पूरा बोला बट इसने सुना नहीं, कभी कभार हो जाता है, इसने एम एस धोनी नहीं सिर्फ एम एस सुना। सो इसमें इससे आप और भी कुछ पूछ सकते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर मैं इंडिया का पूछूं। To Priyansh AI. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? The Prime Minister of India is Narendra Modi. He has been in office since May 26, 2014. However, please verify from a reliable source as I don't want to provide outdated information. ओके तो ये आपने देखा इसने कैसे बोला, कैसे किया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो भी हमने ये इफ एल्स में डाला था, ओपन यूट्यूब, ओपन ये सब, ठीक है, तो वो चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। Welcome to Priyansh AI. ओपन यूट्यूब। And as you can see, it's running massively. It's like totally wonderful thing, and it's without any API keys. So it opened my YouTube as well, right? As you can see. And now, if I go back to this assistant, so I'll show that how Priyansh quit works, right? So I've started it. To Priyansh AI. Priyansh quit. Goodbye, sir. सी जैसे ही मैंने प्रियांश क्विट बोला, इसने बोला मुझे गुड बाय सर, और ब्रेक हो गया। पूरा जो हमारा फ्लो था वो ब्रेक हो गया। बीच बीच में आपका टेक कमांड प्रॉब्लम आता है, जो भी आपने जस्ट इससे पहले एरर देखा था जो मेरे टर्मिनल में अकर हो गया था, वो बेसिकली इसीलिए आता है। कभी कभार जैसे इनिशियली भी हुआ था, एम एस धोनी नहीं सुना था, तो वो कभी कभार सिस्टम टू सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसने उसके माइक्रोफोन ने कितना इनपुट लिया, क्या लिया। अगर नहीं लिया तो वो टेक कमांड एरर आ जाएगा, नथिंग टू हैपन। सो इट्स अ माइनर थिंग्स, बट या majorly all in all, our project is working well, and in addition to it we can add some front end to it. We can make our own API, own AI assistant, and lots of things. So thank you. As of now, we are done with it, and thank you very much. Let's take it.